Okay, class, let's do MCQ on JEE mains. Okay, so we have the question. The equation of a gas for the equation of a state for a real gas is given by P plus A by V square, V minus V is equals to RT, where P is the pressure and V is the volume. R is the universal gas constant and T is the temperature. We want to find out the dimension of constant A. Okay, some of the options are given to us. Okay, so let's start finding. Okay, we know that if you can see over here, pressure is added with the term A by V square. Okay, we know that in physics, any physical quantity, when it is added with some other physical quantity, both the physical quantity will be remain same. Means अगर ये pressure होगा तो ये वाली physical quantity जो होगी वो भी क्या होगी, pressure ही होगी. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर की जो डायमेंशंस होगी सेम डायमेंशंस A by V square की होगी. So I will say that the dimensional formula for the pressure is equals to dimensional formula for A by V square. Okay, we know that what is the dimensional formula for the pressure? The dimensional formula for the pressure is nothing but what? L raised to minus 1, M raised to 1 and T raised to minus 2. Dimensional formula for volume is nothing but what? L raised to 3, M raised to 0 and T raised to 0. If it is V square, so it comes out to be L raised to 6, M raised to 0 and T raised to 0. Okay, let's come back to this equation. I will say that dimension of A is nothing but what? Dimension of pressure into V square. Okay, you can write in this way or you can write in this way. That dimension of pressure into dimension of V square. What is the dimension of pressure? We know that this is the dimension of pressure. So L raised to minus 1, M raised to 1, T raised to minus 2. Dimension of volume square, L raised to 6, M raised to 0 and T raised to 0. Okay, so by the indices rule, it comes out to be 6 minus 1, it becomes 5, L raised to 5, M raised to 1 and T raised to minus 2. So final answer, M raised to 1 by rearranging L raised to 5, T raised to minus 2. So M raised to 1, L raised to 5, T raised to minus 2. So option A is correct for us. Pressure depends on distance as P is equals to alpha by beta exponential minus alpha z by k theta, where alpha beta are constant, z is distance and k is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensions of beta are. Okay, fine. So there is a option given to us. We need to find out which one is correct, right? So let's start. Okay, in the formula for the pressure, you guys don't know what is the dimensional formula for Boltzmann constant. ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. तो पहले हम Boltzmann constant का डायमेंशन निकालते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं. Okay, see, if you guys don't know, I'll tell you that Boltzmann constant का जो यूनिट होता है, that is nothing but joule upon Kelvin. We know that joule किसकी यूनिट है? वर्क डन की यूनिट है. So वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? The dimensional formula for the work done, M raised to 1, L raised to 2 and T raised to minus 2. Clear? Kelvin. Kelvin किसका यूनिट है? टेम्परेचर का. Okay, so टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? We know that it is K raised to 1. So Boltzmann constant का क्या बन गया? Dimensional formula M raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2 and K raised to minus 1. So this is the dimensional formula for Boltzmann constant. अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं. सी क्लास, इन द थ्योरी लेक्चर वी हैव सीन दैट एक्सपोनेंशियल का व्हाट इज एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. सो वी नो दैट एक्सपोनेंशियल की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती. तो यहां पर जो एक्सपोनेंशियल का पार्ट है इसकी कोई भी डायमेंशंस क्या होगी? नहीं होगी. सो देयरफॉर आई विल से दैट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा बाय अल्फा इनटू z by k theta is equals to M raised to 0, L raised to 0 and T raised to 0. Clear? Fine. I will write this part in this way. Alpha into Z upon K theta is equals to M raised to 0, L raised to 0, T raised to 0. So therefore alpha is equals to this part K theta by Z.
ओके फाइन। तो अभी हम k थीटा बाई z का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूले को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा, अल्फा का आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। वी नो दैट k थीटा अपॉन z का डायमेंशनल फॉर्मूला, k का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है m raised to 1, l raised to 2, t raised to -2 and k raised to -1. थीटा इज नथिंग बट टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है k raised to 1 upon z is nothing but distance. We know the dimensional formula for distance, so l raised to 1. So when you solve this part, you'll get the answer as m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2, k raised to 0. Clear? So let's find out the dimensional formula for alpha. So dimensional formula for alpha is equals to m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0 into m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2 and k raised to 0. So it become m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2 by the indices rule. Clear? We know that m raised to 0 into m raised to 1 becomes m raised to 0 plus 1, that is 1, m raised to 1. L raised to 0 into L raised to 1. So L raised to 0 plus 1, that is L raised to 1. T raised to 0 into T raised to -2. So T raised to 0 -2 become T raised to -2. K वाला पार्ट हट गया। ओके, सो हमें अल्फा की डायमेंशनल फॉर्मूला आ गई। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि बीटा का क्या होगा। सी वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म। ओके, हमें पता है एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, सो we know that pressure का जो dimensional formula होगा वही dimensional formula alpha by beta का होगा. So therefore I will write down that dimensional formula for the pressure is equals to dimensional formula for alpha by beta. So therefore I can say dimensional formula for beta is equals to dimensional formula for alpha by pressure. So what is the dimensional formula for alpha? So m raised to 1, l raised to 1, t raised to -2. What is the dimensional formula for the pressure? It becomes m raised to 1, l raised to -1 and t raised to -2. So when you solve them by the indices rule, m raised to 1 upon m raised to 1 becomes m raised to 1 minus 1. So it comes out to be m raised to 0. Similarly, l raised to 1 upon l raised to -1 is equals to l raised to 1 plus 1. We know that when -1, l to the power -1 will come up, become l to the power 1. So l raised to 1 plus 1 becomes 2. T raised to -2 upon t raised to -2, it becomes t raised to 0. So the dimensional formula for beta is m raised to 0, l raised to 2 and t raised to 0. That's the dimensional formula. See the third problem. The question is in that way, which of the following sets have different dimensions? Option A, pressure, Young's modulus, stress. Option B, EMF, potential difference, electric potential. Option C, heat, work done, energy. Option D, dipole moment, electric flux and electric field. So before starting the question, I will suggest you one thing. Before finding the dimensions, first find out their units. Because क्या होगा ना, अगर जिन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होगी, ऑब्वियसली उनकी डायमेंशन सेम आने वाली। ओके, सो नो नीड टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑन द इनिशियल स्टेज बिकॉज इट विल, आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस नहीं फाइंड आउट करके सबसे पहले उनकी यूनिट्स देखेंगे। अगर यूनिट सेम नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि डायमेंशनल फॉर्मूला सही भी हो या गलत भी हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट देखेंगे। अगर यूनिट सेम है तो ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ओके, अगर यूनिट अलग है तो हम उनके डायमेंशंस निकाल के चेक करेंगे क्या डायमेंशनल फॉर्मूला अलग आ रही है या नहीं आ रही। ओके, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला क्या है, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस। वी नो दैट प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इज नथिंग बट व्हाट, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किस में मेजर होता है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट क्या बनी, प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आपको कुछ ही टाइम में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता, आई विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर द यंग्स मॉडुलस, दैट इज फोर्स अपॉन ए। दिस इज स्मॉल एल इज नथिंग बट द एलोंगेशन एंड कैपिटल एलोंगेशन मींस ये लेंथ ही है, दिस इज वन टाइप ऑफ लेंथ, अपॉन f इंटू एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। एल भी हमारा क्या लेंथ है और स्मॉल एल भी हमारा क्या है, लेंथ है। ओके, सो आई विल से दैट फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट मीटर और स्मॉल एल की यूनिट भी क्या होगी, मीटर, क्योंकि ये भी लेंथ ही है।
So when you cancel out this term, so Newton per meter square किसका यूनिट आया? यंग्स मॉडुलस का. नेक्स्ट विल गो फॉर द स्ट्रेस. स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. सो इफ यू विल सी सबकी यूनिट्स क्या है? सेम है. अगर यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशंस भी क्या होगी? सेम होगी. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बी पार्ट. लेट्स चेक फॉर द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है? ईएमएफ. वी नो दैट ईएमएफ किस में मेजर होता है? वोल्ट में. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने देखा हुआ है इन द 10th स्टैंडर्ड, वोल्ट में ही मेजर होता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो मेजर्ड इन वोल्ट बिकॉज ये सब पोटेंशियल के ही पार्ट है. सो ये भी किस में मेजर होता है? वोल्ट में. सो इफ यू विल सी बी ऑप्शंस की भी तीनों यूनिट्स क्या है? सेम है. नेक्स्ट विल सी द सी पार्ट. सी में पहला क्वांटिटी कौन सी है? हीट. वी नो दैट हीट इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी. सो हीट क्या एक टाइप की एनर्जी है और हमें पता है हीट की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज नथिंग बट जूल. वर्क डन, हमें पता है वर्क डन की यूनिट भी जूल है. एनर्जी, एनर्जी की भी यूनिट क्या है? जूल ही है. सो ऑब्वियसली अगर ऑप्शन ए बी सी में सबकी यूनिट सेम आ रही है तो 101% ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिफरेंट डायमेंशंस. ऑब्वियसली एसी की डायमेंशंस अलग होगी बट टू प्रूव यू विल फाइंड आउट द डायमेंशंस. ओके, चलो डी की डायमेंशंस, ऑप्शन डी की डायमेंशंस निकालेंगे सारे फिजिकल क्वांटिटी की. पहला क्या है? डाइपोल मूवमेंट. सो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला मैं दे देता हूं Q into 2L, where Q is the charge and L is the length. ओके, तो चार्ज की डायमेंशंस क्या होती है? We know that the dimension for the charge is I raised to 1 and T raised to plus 1. This is the dimension of charge. ये चार्ज की डायमेंशन है. ठीक है. लेंथ की डायमेंशन हमें पता है क्या होगी? डायमेंशन फॉर द लेंथ इज L raised to 1. सो डाइपोल मूवमेंट की डायमेंशन क्या होगी? डाइपोल मूवमेंट P से रिप्रेजेंट होगा. सो डाइपोल मूवमेंट की डायमेंशन क्या होगी? I raised to 1, T raised to 1, L raised to 1. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो L raised to 1, T raised to 1 and I raised to 1. सो ये किसकी डायमेंशन हो गई? डाइपोल मूवमेंट की. ओके, नेक्स्ट विल फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ी देर के बाद फाइंड आउट करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले की मदद लेंगे. F is equals to QE. So E is equals to F upon Q. So the dimensional formula for E is nothing but what? The dimensional formula of F by Q. We know that what is the dimensional formula for F? M raised to 1, L raised to 1 and T raised to minus 2. Dimensional formula for the charge? T raised to 1 and I raised to 1. So it becomes M raised to 1, L raised to 1, T raised to minus 3. Minus 2 minus 1 become what? Minus 3. I raised to minus 1. So this is the dimensional formula for electric field. Next we'll find out the dimensional formula for the electric flux. To find out the dimensional formula for the electric flux, we'll take this formula. Phi is equals to electric field into area. इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला पहले निकाल दी बिकॉज यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला लगेगा. ओके, so therefore I will say that the dimensional formula for electric flux is equals to dimensional formula of electric field into dimensional formula of area. What is the dimensional formula for the electric field? It is M raised to 1, L raised to 1, T raised to minus 3, I raised to minus 1. Dimensional formula for area, it's L raised to 2. So when you solve this, M raised to 1, L raised to 1 plus 2 become 3, T raised to minus 3 and I raised to minus 1. If you will check, all the dimensional formulas are different. So according to this, our correct option is D. Let's do the next question. The dimensions of torque is. So these are the option to us. So let's find out the dimension for the torque. First we need to recognize what is the formula for the torque. Torque is क्या formula है? Torque is nothing but what? Force into distance. Okay. So जो dimensional formula torque का होगा वही dimensional formula force into distance का होगा. Clear? So force का dimension हमें पता है. Dimensional formula m raised to 1, L raised to 1, T raised to minus 2. Distance का formula L raised to 1, so it comes out to be m raised to 1, L raised to 2 and T raised to minus 2. So according to this, option B is the correct answer. What is the dimensional formula for the modulus of rigidity?
we have these options. Fine, let's start finding. So we need to analyze the formula. Modulus of rigidity का formula क्या है? So modulus of rigidity is defined as, this is modulus of rigidity, that is nothing but what? Force upon A theta. A is the area and theta is the angle. Okay, so therefore I will say that dimensional formula for modulus of rigidity is nothing but dimensional formula for force upon area. As we know that there is no dimensional formula for theta. Theta की कोई भी dimensions नहीं होती है. Okay, so we can eliminate the theta over here. So what is the dimensional formula for force? It is m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2. Dimensional formula for area, it's l raised to 2. So it becomes m raised to 1, l raised to minus 1 and t raised to minus 2. So option B is the correct answer. That's all. Next question. The dimensions of electric resistance are m raised to 1, l raised to 2. Okay class, let's do the next question. Dimensions of electric resistance are. So we need to find out the dimensions for electric resistance. So first we need to think the formula. कि electric resistance के लिए कौन सा formula हमें याद आ रहा है. Okay, obviously we have the formula of Ohm's law that V is equals to IR, R is equals to V by I. Correct? I के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि I आपकी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है. ओके, तो I का तो जो डायमेंशन होगा वो हम डायरेक्टली लिख देंगे. द प्रॉब्लम इज V. प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए? V. नाउ V is the potential difference. We know that the potential difference का formula is work done upon charge. ये potential difference का formula है. ओके, वर्क डन की डायमेंशंस हमें पता है, चार्ज की डायमेंशंस भी हमें पता है, तो वर्क डन की डायमेंशंस हम डायरेक्टली लिख देंगे. दैट इज m raised to 1, l raised to 2 and t raised to minus 2. करेक्ट? सो दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन. अभी चार्ज का जो डायमेंशन है, वी नो दैट चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम. आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा दैट करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज बिकम्स करंट इनटू टाइम. तो जो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा? करंट इनटू टाइम का होगा. सो करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी, वी नो दैट फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? a raised to 1. करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला a raised to 1 एंड टाइम का is t raised to 1. तो हमें चार्ज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया. आई विल पुट दिस डायमेंशनल फॉर्मूला ओवर हियर. तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? a raised to 1 एंड t raised to 1. ओके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे किसका मिला? पोटेंशियल डिफरेंस का. किसका मिला हमें? पोटेंशियल डिफरेंस का. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2 plus 1 will come up become minus 1. So minus 2 minus 1 become minus 3 and a raised to minus 1. So this is the dimensional formula for potential difference. I will put this dimensional formula in the formula of resistance. That is dimensional formula for R is equals to dimensional formula of V upon I. We know the dimensional formula for V is m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 3, a raised to minus 1. Dimensional formula for I is a raised to 1. So it becomes, final answer, m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 3, a raised to 1 will come up become minus 1. So minus 1 become minus 2. So that's the formula we have. So m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 3 and a raised to minus 2. So option B is the correct answer. Which of the following represent the correct dimensions of coefficient of viscosity? To find out the dimensions of coefficient of viscosity, हमें क्या चाहिए? Coefficient of viscosity का फॉर्मूला चाहिए. ओके, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि coefficient of viscosity और viscous force क्या होता है. ओके, उसके बाद हम फॉर्मूला चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल लिया है एंड दिस इज अ कंटेनर विच कंटेन्स वाटर इनसाइड इट, और मैंने बॉल को ड्रॉप किया. सो अ बॉल, ये जो बॉल होगा वो गिरेगा नीचे और पानी के अंदर जाएगा. अच्छा, जब बॉल पानी के अंदर होता है तो इस बॉल के ऊपर 2 फोर्सेस लगेगी, 3 फोर्सेस लगेगी. पहला फोर्स mg जो उसका खुद का वेट होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दूसरा फोर्स होता है अपथ्रस्ट, कौन से डायरेक्शन में होता है? ऊपर की डायरेक्शन में होगा. और तीसरा जो फोर्स होगा वो विस्कस फोर्स होगा. नाउ व्हाट इज विस्कस फोर्स? विस्कस फोर्स इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. सॉलिड में जैसा फ्रिक्शनल फोर्स होता है
वैसे ही लिक्विड में विस्कस फोर्स होता है, ओके, जो बॉल की मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, ओके। सो यही विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है बाय स्टोक्स लॉ, स्टोक्स ने बताया था, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, ओके, 6 pi eta RV. Now this is coefficient of viscosity. So coefficient of viscosity becomes F upon 6 pi RV. Now the question arises, what is R? R is the radius of ball. And what is V? V is the velocity of the ball going in the downward direction. And F is the viscous force. Okay. So can I say that the dimension of coefficient of viscosity is nothing but what the dimensions of force upon RV, as 6 pi is a dimensionless constant. इसकी कोई dimension नहीं होगी. Okay. We know that what is the dimension for the force? It is m raised to 1, l raised to 1 and t raised to minus 2. Dimension of R, it is l raised to 1. Dimension of V, it is l raised to 1 and t raised to minus 1. Okay, dimensions of force, dimension of radius, dimension of velocity. So when you solve it, it comes out to be m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2 upon l raised to 2 and t raised to minus 1. Further, m raised to 1, l raised to 1 upon l raised to 2 become l raised to minus 1. T raised to minus 2 upon t raised to minus 1, that becomes t raised to minus 1. So m raised to 1, l raised to minus 1 and t raised to minus 1 is our answer. So option C is the correct answer. Dimensions of 1 upon mu naught epsilon naught where symbols have their usual meanings are. What is mu naught? आप लोगों को पता नहीं है, ओके। जैसे जैसे हम 11th 12th पढ़ेंगे दोनों की डेफिनेशंस और डायमेंशंस और यूनिट्स क्लियर होगी, बट फॉर नाउ आई विल गिव यू वन फॉर्मूला जिससे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। डोंट वरी क्लास, आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि आपके पास फॉर्मूला नहीं है। जैसे जैसे 11th 12th में जाएंगे आपके पास सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला आते जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ द 2 years it will be easy for you to find out the dimensions of any physical quantity, right? Yeah. So let's start with this. 1 upon mu naught into epsilon naught. इसका एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, that 1 upon mu naught epsilon naught is nothing but what c square. Now what is c? c is the speed of light. c क्या है? Speed of light you can say. तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कि क्या डायमेंशन होगी। Okay, so therefore I will say that dimensional formula 1 upon mu naught epsilon naught is equals to dimension of c square. We know that the dimensional formula for velocity, अगर मैं सिर्फ velocity की बात करूं तो dimensional formula for velocity is l raised to 1 and t raised to minus 1. Correct? Fine. So if let's talk about c square. So the dimensional formula for c square is l raised to 1 t raised to minus 1 का square. It comes out to be l raised to 2 and t raised to minus 2. So according to this, our answer is option C. See how simple it is. The problem is, which of the following units denotes the dimension m raised to 1, l raised to 2 and q raised to minus 2, where q denotes the electric charge. Okay. See class, we know that electric charge is not a fundamental quantity. It is a derived quantity. Okay. बट यहाँ पर इन्होंने अगर चार्ज लिया है डायमेंशन फॉर्मूले में तो हम ऐसे मान के चलेंगे कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तभी हम उसकी डायमेंशंस बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ उन्होंने यूनिट्स दी हुई है। ओके, हम इन यूनिट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे किसकी यूनिट, कौन सी यूनिट की डायमेंशंस इसके साथ मैच हो रही है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला यूनिट क्या है? हेनरी। हेनरी अब किसका यूनिट है? हेनरी इज अ यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो एल से रिप्रेजेंट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, ये फिजिकल क्वांटिटी आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। क्लियर? तो अभी हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस ये फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड हो। सो एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, E is equals to L di by dt, where E is the EMF, L is the self inductance, di is the change in current। हमें पता है चेंज इन करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो करंट के डायमेंशन के फॉर्मूला के इक्वल होगा। ओके, dt is the change in time, so चेंज इन टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, di को मैं i से रिप्लेस कर देता हूँ और dt को मैं t से रिप्लेस कर देता हूँ। सो देयरफॉर
हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, ET अपॉन I। क्लियर, फाइन। E इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। टाइम का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकेंड। करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। ओके, नाउ 1 वोल्ट इज नथिंग बट व्हाट, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो जूल अपॉन कूलम, वोल्ट की जगह हम क्या पुट करेंगे, जूल अपॉन कूलम सेकेंड और एम्पियर। सी वोल्ट की जगह जूल अपॉन कूलम डाल दिया, सेकेंड एज इट इज एंड एम्पियर एज इट इज। ठीक है, नाउ अगर आप यहां पर देखोगे, इन दिस केस आपके पास मास से लेंथ है, बट इफ यू विल सी देयर इज नो करंट, वहां पर करंट नहीं है। क्या करंट चार्ज पे डिपेंड करता है, यस, करंट चार्ज पे डिपेंड करता है, Q by T। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब मुझे करंट को एलिमिनेट करना है, करंट की जो यूनिट है एम्पियर, उसको हटाना है हमें। कैसे हटाएंगे हम, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। सो आई विल राइट डाउन कूलम इज नथिंग बट एम्पियर सेकंड, और यू कैन राइट एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम बाय सेकंड। ओके, तो एम्पियर की जगह में क्या पुट करूंगा, कूलम बाय सेकंड। सो इट कम्स आउट टू बी जूल सेकंड, कूलम ऑलरेडी है, एम्पियर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, कूलम अपॉन सेकंड। सो इट बिकम्स जूल सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, दिस सेकंड विल गो अप। ओके, फाइन। अभी डायमेंशंस बनाते हैं हम। जूल की डायमेंशंस क्या होती है, वी नो दैट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर जूल इज m⁻⁴ l⁻², t⁻⁻²। सेकंड स्क्वायर, सो टाइम का मतलब टाइम का स्क्वायर किया गया यहाँ पर, सो t⁻² अपॉन कूलम। कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। सो चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला इन्होंने बोला है कितना लेना है, Q। Q denotes the electric charge. Okay, so Q⁻², fine. So 2 minus 2 comes out to be 0. So it will be m⁻⁴ l⁻², t⁻⁴, 2 minus 2. Q⁻² will become Q⁻². So by eliminating t⁻⁴, l⁻² and Q⁻². So this is the dimensional formula. We'll check, is that correct? Yes, this is correct. So option A is your correct answer. The dimensions of magnetic field ML, T and C are given as. So हमें magnetic field की dimension निकालना है. Okay, again in the same problem, जो last problem हमने किया था वहां पर भी चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी रख के सॉल्व किया था, यहाँ पर भी हमें चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी रख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला हुआ है जो चार्ज के फॉर्म में है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन मुझे निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड का हम कोई भी फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। सो आई विल गिव यू वन फॉर्मूला, F is equals to QV into B, where B is the magnetic field, F is the force, Q is the charge and V is the velocity. Clear? Okay, so can I say B is equals to F upon QV? Okay, so therefore the dimensional formula for B is nothing but the dimensional formula for force upon dimensional formula for Q into dimensional formula of V. So dimensional formula of force is m⁻⁴ l⁻², t⁻⁻²। Dimensional formula for Q is, I will say, अच्छा इन्होंने यहाँ पर C लिया हुआ है तो c⁻⁴। Q चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ओके, कूलम के लिए इन्होंने C से रिप्रेजेंट किया है, सो हम भी C से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी, we know that l⁻⁴ and t⁻⁻²। So when you solve this part, you'll get the answer as m⁻⁴, 2 minus 1 comes out to be l⁻⁴, minus 2 plus 1 comes out to be t⁻⁻⁴, and c⁻⁻⁴. So according to this, m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻⁴, and c⁻⁻⁴. Option A is the correct.